जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, ओजेडी में आपका स्वागत है। सुपर 50 सीरीज नेलेट ओ लेवल पाइथन थर्ड पेपर Programming and Problem Solving through Python. Set 4, question 151 to 200. Let's start with the first set of slide. Question number 151. Is Python case sensitive when dealing with identifiers? आपके ऑप्शन रहे A, yes, B, no, C machine independent and D none of these। तो जल्दी से आंसर करिए आप। Yes, A is correct answer। Yes, Python is a case sensitive programming language. This means that is consider upper and lower case letter differently। Next question, all keywords in Python are A capitalize, V lowercase, C uppercase, none of these। तो जल्दी से आप सही आंसर चूज करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने ऑप्शंस को। B is correct answer, lower case। Python keywords are special reserved words that have specific meaning and purposes and can't be used for anything but those specific purposes। Next question, which character is used in Python to make a single line comment? Option A, triple quotes, option B, double slash, option C, hash sign, option D, triple quotes। तो which one is correct answer? Quickly, yes, C is correct option। Comment can be used to explain Python code। Comments can be used to make the code more readable। Comments can be used to prevent execution when testing। Next question, what is the method inside the class in Python language? Option A, object, option B, attributes, option C, property, option D, function। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने सही आंसर को कमेंट करिए। ऑप्शन डी, फंक्शन। A function is a block of code which only runs when it's called। You can pass data known as a parameter into a function। Next question, what is the meaning of numpy? Option A, number for Python, option B, numbering Python, option C, numerical Python, option D, number in Python। Quickly answer करिए आप कमेंट बॉक्स में। C is the correct answer, numerical Python। NumPy is a Python library used for working with arrays। It also functions for working in domain of linear algebra, Fourier transform and matrix। Next question, bytes, byte array, memory view are type of the dash data type। A, mapping types, B, binary types, C, boolean types and none of these। जल्दी से आप आंसर कमेंट करिए। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, बाइनरी टाइप्स। द बाइट एंड बाइट arrays are used to manipulate binary data in Python। These byte arrays are supported by buffer protocol named MoneyView। The MoneyView can access memory of ordered binary object without copying and actual data। Next question, Python directory is used to store the data in a format A, key value pair, group value pair, and C, select value pair, D, value key pair।
Quickly answer in the comment box. Yes, A is the correct answer. Key value pair. Python's efficient key value has table structure is called dict. The content of a dict can be written as a series of key value pairs within braces. Next question. Conditional statements are also known as a statements. A array, B decision making, C iteration, and D jump statement. Your time start now. Quickly answer in the comment box. Please जल्दी से आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में. A या B या C या D. Yes, B is the correct answer. Decision making. Decision making statements can direct a program to execute on the basis of instruction if a certain condition is true or another if it's false. Next question. Amongst which of the following if syntax is true? A. If condition. B. If condition. C. If parenthesis and condition, and D. All of these. Correct answer is A. If condition colon. If statement evaluates condition, if condition is evaluated to true, the code inside the body of if is executed. If condition is evaluated to false, the code inside the body of if is skipped. Next question. Which of the following is not used as a conditional statement in Python? Option A, if else. Option B, if elif. Option C, switch. Option D, if. जल्दी से आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में. Quickly. Yes, option C is the correct answer. Switch. The switch case statement is like a if else statement, but a cleaner and quicker way than if else is it is present in language like C++ or Java. We use switch case especially when we need run only a specific code or block, and if the other code block do not satisfy the condition, they will be skipped. Next question. The is the built-in function that returns a range object that consists series of integer numbers which we can iterate using a for loop. Option A, set. Option B, dictionary. Option C, hello. Option D, range. Quickly आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में. Quickly. Yes, D is the correct answer. Range. The range function returns a sequence of numbers starting from 0 by default and increments by 1 by default and stops before a specified number. Next question. What will be the output of following program? Option A and option B, option C and option D. तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए. ऑप्शन ए या बी या सी या डी. Quickly. Yes, C is the correct answer. Thus, we sometimes prefix binary numbers with 0v. 0v to differentiate binary numbers from numbers in base 10 representation. So instead of using 0100, we would say that 4 in decimal is equivalent to 0v or 0100 in binary. Next question. Study the following program. Yes, आप इस लाइन को आराम से पढ़ें और फिर आंसर करें. What will be the output of this program? Option A, Python O level 2. Option B, Python well. Option C, Python 2 O level. Option D, Python 2. तो जल्दी से आप सही आंसर को चुनिए. कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपने सही जवाब को. तो अब देखते हैं. Yes, option C is the correct answer. Python 2 O level. The print function prints the specified message to the screen or other standard out device. Next question. Study the following programs. Read
carefully. Option A 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Option B 2, 3, 4, 4, 5, 6. Option C 4, 5, 6, 2, 3, 4. Option D error and duplicate element. तो सही जवाब है A. The update method insert the specified items to the dictionary. The specified item can be dictionary or an iterable object with key value pairs. Next question. What will be the value of following Python expression? आराम से इसे पढ़िए और सही जवाब दीजिए। तो देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 1। तो सही जवाब है बी 2। The percent symbol in Python is called the modulo operator. It returns the remainder of dividing the left hand operand by right hand operand. Next question. Which of the following function convert a string to a float in Python? Option A int x and base. Option B long x and base. Option C float x. Option D strx. तो सही जवाब है C. Float is a function or reusable code in the Python programming language that converts a value into floating point number. Next question. Which keyword is used for function in Python language? Option A function. Option B def. Option C define. Option D fun. तो कौन सा ऑप्शन सही है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। Yes, B is the correct answer. To Python def keyword is used to define a function. It is placed before a function named that is provided by the user to create a user defined function. आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। What will be the output of the following Python code snipped if x equal 1 question mark x less than 2? Option A 2, option B 4, option C 1, option D 8। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर कमेंट करिए। Yes, option B is the correct answer. The Python snip collection container helper function for Python 3.6 it includes utilities for most common data types such as primitives, list, dictionaries and date object. Next question. What does pip stand for Python? Option A pip install Python. Option B pip installs packages. Option C preferred installer program and option D none of these. तो क्विकली आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? आप इस कोड को आराम से पढ़ें। फिर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। यू हैव अ 4 ऑप्शन। क्विकली आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Yes. Quickly answer in the comment box. Your correct answer is C. The Python snip collection contains a helper function for Python 3.6. It includes utilities for most common data types such as a primitives list, dictionaries and date objects. अगला क्वेश्चन। Which of the following function is a built-in function in Python? Option A factorial, option B print, option C sqrt, option D seed। तो जल्दी से आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। Yes, B is the correct answer. The Python built-in function are defined as a function whose functionality is predefined in Python. अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। Which of the following is the use of id function in Python? Option A object does not have unique id. Option B return objects id.
ऑप्शन सी नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से आप कमेंट में अपना आंसर टाइप करिए जल्दी से। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। तो रिटर्न ऑब्जेक्ट्स आईडी। Python ID function return the identity of the object. The identity of an object is an integer which is guaranteed to be unique and constant for this object during its lifetime. Two objects with non-overlapping lifetime may be have the same ID value. अगला क्वेश्चन, what will be the output of the following Python function? Option A -3, ऑप्शन बी -4, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी फॉल्स। आपका टाइम शुरू होता है और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्विकली। ऑप्शन ए या बी या सी या डी, क्विकली। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फॉल्स। द min function takes an iterable as an argument that returns smallest item in the iterable. Similarly, the max function accept the iterable as an input returns iterable largest term. The basic syntax for both function is max iterable and min iterables. अगला क्वेश्चन, what will be the output of following Python expression? आप इस स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए, सावधानी से पढ़िए और फिर सही आंसर चूज करिए। आपका समय स्टार्ट होता है। ए 56.236, बी 56.0000, सी ऑप्शन 56.23 एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी 56.24। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of these the definition for packages in Python? Option A, a set of main modules, set of functions. Option C, A folders of Python modules. Option D, set of codes. Quickly answer करिए कमेंट बॉक्स में। सही जवाब है C, a folder of Python modules. Python modules may contain several classes, Python's variable, etc. Whereas Python packages contain several modules. In simpler terms, packages in Python is a folder that contains various modules as a files. अगला क्वेश्चन, what will be the output of the following Python statement? इस स्टेटमेंट को आप सावधानी से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी बी सी ए। तो जल्दी से आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। यस, और सही जवाब है बी, ए बी सी। टू concatenate or combine two strings you can use the plus operator. अगला क्वेश्चन, which one of the following is not a keyword in Python language? Option A pass, option B val, option C assert, option D for। तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो वी इज द करेक्ट आंसर, वेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, विच मॉडल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी parses options received for the command line? Option A getarg, option B getopt, and C main, and D OS। तो जल्दी से आप सही आंसर को कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से, क्विकली, आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। क्विकली। यस, वी इज द करेक्ट आंसर, getopt। A Python library is a collection of related modules. It contains bundles of code that can be used repeatedly in different programs. It makes Python programming simpler and convenient for the programmer. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और what will the output of the following Python code? Question number, option A abc.def, option B abc.def, C and D। क्विकली आंसर करिए, देखते हैं कौन सा सही जवाब है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
क्विकली आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और सही जवाब है ए कैपिटल है abc.def। The capitalized method converts the first character of a string to an upper letter and all other alphabets to lowercase। अगला क्वेश्चन, which of the following statement is used to create an empty set in Python? Option A parenthesis, option B square bracket, option C brace curly brace, and option D angle bracket। Option C is the correct answer। We set by placing all the element inside curly brace separated by comma। A set can have any number of items. They may be different types: integer, float, tuple, string, etc. Next question, to add a new element to a list we use which Python command? Option A, option B, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो क्विकली अपने आंसर को चूज करिए और कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में क्विकली। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। द अपेंड मेथड टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट एंड एड्स इट टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू कैन क्रिएट अ लिस्ट एंड यू वांट टू ऐड अनदर नंबर टू इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the two main types of function in Python? Option A system function, option B custom function, option C built-in function and user defined function, option D both A and B। टाइम स्टार्ट नाउ, क्विकली आंसर करिए आप अपने कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शन है ए सिस्टम फंक्शन, ऑप्शन बी कस्टम फंक्शन, ऑप्शन सी बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड डी बोथ। या सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What will be the output of following Python code snippet? आप इस स्टेटमेंट को सावधानी से पढ़िए, फिर सही जवाब चूज करिए। ऑप्शन ए है एरर, ऑप्शन बी ट्रू, ऑप्शन सी फॉल्स, ऑप्शन डी नॉट नो आउटपुट। तो क्विकली आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है क्विकली। और B option is the correct answer, true। True is equal to 1 and false is equal to 0. Adding booleans together is a quick way to count the number of true values. This can come in handy when you need to count the number of items that satisfy a condition। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What will be the output of following Python expression? Round 4.576, option A 4, option B 4.6, option C 5 and option D 4.5। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी या सी या डी। क्विकली, या सी इज द करेक्ट आंसर 5। द राउंड फंक्शन रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर that is a rounded version of the specified number which is the specified number of decimal। The default number of decimal is a 0, meaning that functions will return the nearest integer। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the output of print math.pop parenthesis open 3 comma 2 parenthesis close and close? Option A 9.0, option B 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 5.0। और क्विकली आंसर करिए कौन सा सही जवाब है। और सही जवाब है ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द math.po method returns the value of x raised to power by y। If x is negative and y is not an integer, it's return a value error। This method converts both arguments into a float। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the output of following code? आप केयरफुली स्टेटमेंट को पढ़िए। ऑप्शन ए है 5.3, ऑप्शन बी है 5.0, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी none of these। तो सही जवाब है बी। In Python, you use the double slash operator to perform float division। This float operator divides the first number by second number and rounds the result to down the nearest integer or whole number। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The operator AND is used for bitwise AND, logical AND,
एंड बिटवाइज और एंड डी लॉजिकल और। तो कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से आप चूज करिए, ए बी सी डी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपने सही जवाब को, और सही जवाब है ए बिटवाइज एंड। द मोस्ट बेसिक फंक्शन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू is that AND operator is a logical as well as the bitwise operator, whereas the double AND operator is only a logical operator. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following commands will create a list? Option A list 1 equal list parenthesis, option B list 1 equal square bracket, option C एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सही जवाब है डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज लिस्ट वन इज 1 2 3, व्हाट इज लिस्ट आई मल्टीप्लाई बाय 2, एंड ऑप्शन इज ए 2 6 5, ऑप्शन बी 1 3 2 1 3 2, ऑप्शन सी 1 1 2 3 2 1, ऑप्शन डी 2 6 4, और सही जवाब है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? आप इस स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़िए, और आपके ऑप्शन है ए कर्ली ब्रेस 1 3 2 एंड यस डी इज द करेक्ट आंसर, कर्ली ब्रेस 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टपल? ए इम्यूटेबल नेचर, बी म्यूटेबल नेचर, एंड सी इंडेक्स प्रिजर्वेशन, एंड डी हेटेरोजेनियस ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन आपके सही जवाब है बी म्यूटेबल नेचर। Tuples are used to store multiple items in a single variable. Tuple is one of 4 built-in data type in Python used to store collection of data, and the other 3 are list, set and dictionary, all with different qualities and uses. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Suppose list 1 is 3 5 25 1 and 3. What is the main list 1? Option A 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 1। तो जल्दी से आप अपने ऑप्शन को चुनिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 1। यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज लिस्ट 1 इज 1 5 9, व्हाट इज सम लिस्ट 1? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 1। तो जल्दी से आप अपने सही जवाब को कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में क्विकली। यस, बी इज द करेक्ट आंसर 15। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू सफल द लिस्ट, से लिस्ट 1, व्हाट फंक्शन डू वी यूज? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्विकली आंसर करिए अपने सही जवाब को कमेंट बॉक्स में क्विकली, कम ऑन। यस, सही जवाब है सी, रैंडम डॉट सफल parenthesis list 1. The shuffle method takes a sequence like a list and recognize the order of item. Note this method change the original list, it does not return a new list. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज लिस्ट 1 इज 233, 222, 14, 25. What is the list? Square bracket -1, square bracket close. Option A error, option B 2, option C 25, option D none of these. तो जल्दी से अपने सही जवाब को चूज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सही जवाब है C 25। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Yes, what will be the output of the following Python code? Here are two statements. आप इसे आराम से सावधानी से पढ़िए और फिर सही जवाब दीजिए। आपके ऑप्शन है ए आमिर, ऑप्शन बी दमन,
ऑप्शन सी एरर एंड ऑप्शन डी एन। तो क्विकली आंसर करिए अपने कमेंट बॉक्स में क्विकली। यस, करेक्ट आंसर इज डी एन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। What will be the output of the following Python code? Here are three statement. आप इसे सावधानी से पढ़िए। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी एरर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्विकली आंसर करिए अपने कमेंट बॉक्स में। सही जवाब देखते हैं क्या होता है। क्विकली आंसर। यस, सही जवाब इज बी फॉल्स। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। Next question. To insert element 5 at third position in list 1, we use which command? Option A list1.insert 3, 5. V. Option C list and option D. Quickly answer please. Yes, B is the correct answer. And अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Yes, suppose list 1 is 3, 4, 5, 20 and 5. What is the index 1 dot index 5? Option A 2, option B and option C and option D. So D is the correct answer 2. The index in Python returns the position of the element in a specified of the list character is the in the string. It follows the same syntax whether you use it on list or a string. अगले प्रश्न पे चलते हैं। सपोज लिस्ट 1 इज 3, 4, 5, 20, 5, 25, 1, 3. What is list 1 dot count 5? Option A 0, option B 4, option C 1, option D 2. जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। या B इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन 200 क्वेश्चन। आपने अभी 50 क्वेश्चन किए 151 से 200 तक का। अब हम मिलेंगे अगले सेट के साथ अगले दिन। तो आज के लिए धन्यवाद। ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन, थैंक यू। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व यूट्यूब ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओ लेवल, CCC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।